Hi everybody, welcome to your legal buddy. So we are continuing our lectures on NABARD Act. ठीक है ना? So till now we have covered a lot of things. So today we will be covering how National Bank, that is the NABARD Bank, in this statute, wherever you will find the National Bank written, consider it as NABARD. ठीक है ना? So today we will be learning how NABARD takes loan to carry out its function. ठीक है ना? So section chapter 5 section 19 borrowings by national bank and believe it or not, questions are found in various government exams from these types of sections. ठीक है ना? So borrowings by the national bank. ठीक है ना? तो till now we have learned that national bank, that is NABARD, carries out its function, and the primary function of NABARD is to uh, help in agricultural development of the country. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाबार्ड बैंक है ना, it can issue and sell bonds. ठीक है ना? You will go to any bank and you will try to invest in any bond that is issued by NABARD. It is easily available in any bank of the country. ठीक है? It can issue and sell bonds, debentures, and other financial instruments with or without guarantee. Question that is asked in exam is, can NABARD issue bonds and securities without any guarantee? The answer is yes, with or without guarantee of the central government on such terms and condition as may be approved by the board. ठीक है ना? Another thing, it can borrow money from RBI. ठीक है? First, it can borrow money from RBI, repayable on demand or otherwise. Repayable on demand का मतलब this means कि whenever RBI asks कि give back our money, then NABARD has to pay. So it can borrow money from the RBI, repayable on demand or otherwise, on such terms and conditions, including in terms relating to security and purposes as may be specified by RBI. Nothing to explain here, but important thing to remember is NABARD can borrow money from RBI. ठीक? It can borrow money from central government also. It can go to Narendra Modi and say भैया पैसा दे दो, तो नरेंद्र मोदी ने कहा हाँ ठीक पैसा ले लो. ठीक? Or from any other authority or organization or institution approved by the board. ठीक है? That institution that will give money to RBI has to be approved by the board of directors. ठीक? Another thing is, uh, except from the central government, except it can accept borrowing from the central government or state government, or a local authority, a state land development bank, a state cooperative bank, or a scheduled bank, or any other person or body, whether incorporated or not. Whether incorporated or not, a very important thing. जिससे भी नाबार्ड पैसा ले रहा है, whosoever is borrowing money to the NABARD, it does not mean that it has to be incorporated. ठीक है ना? And whosoever is giving money to the NABARD, it has to be the private, it has to be prior approval of the RBI. ठीक? अब देखिए, it can also receive gift, grants, donations and benefactions from the central government. ठीक? कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ बताई है, वो आप देखिएगा. ठीक है? सेक्शन 20 says कि नाबार्ड कैन ऑल्सो टेक मनी और इट कैन ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम इन फॉरेन करेंसी. ठीक है ना? इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ. देर हैज टू बी सर्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पढ़ लेते हैं. ठीक है? इट सेज no matter what is written in FEMA or any other law for time being in force. ठीक है ना? The NABARD may borrow with the previous approval of central government. ठीक है? And in consultation with the RBI. ठीक है? Very important thing to remember, if you are borrowing in a foreign currency, if NABARD is borrowing from a foreign currency, in a foreign currency, you have to take the prior approval of central government and RBI. ठीक? So it is saying it can borrow foreign currency from any bank or financial institution in India or elsewhere. Remember, बाहर कोई अगर कंपनी, बाहर कोई बैंक इनकॉर्पोरेटेड है, उससे भी ये पैसा ले सकता है. ठीक है? अनदर थिंग, क्रेडिट फंक्शंस ऑफ बैंक. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नाबार्ड, क्रेडिट फंक्शन मतलब लोन देने की जो फंक्शंस है आरबीआई के, नाबार्ड के, उसके बारे में विल बी टॉकिंग है. ठीक? सेक्शन 21, प्रोडक्शन एंड मेकिंग क्रेडिट, मार्केटिंग क्रेडिट. ठीक है ना? National Bank may provide by the way of refinance, loans and advances, repayable on demand or an expiry of fixed period not exceeding 18 months. ठीक? Now, very important thing, यहाँ पे whatever loan NABARD will give,
The maximum period for which that loan is sanctioned is for 18 months. ठीक है ना? ठीक, very important thing. And that loan has to be approved by RBI. Another very important thing. Two things are very important. Ki for more than 18 months you cannot sanction the loan, and for sanctioning the loan you need the prior approval of Reserve Bank of India. Another important thing is कि whatever money NABARD is giving in loan, that has to be either in agricultural operations or marketing of crops or marketing and distribution of inputs necessary for agriculture, ठीक? Or any other activity for the promotion of agricultural and rural development, ठीक? Bas. Or another thing is it can also, as we have discussed earlier also, it can also give money for the enhancement in the field of handicraft and other rural craft, ठीक? ठीक, यहाँ पे till now it is very clear, and it is very important also. For more than 18 months it cannot give sanction, it cannot sanction the loan, and whatever loan it is sanctioning, it has to be with the prior approval of the Reserve Bank. Another clause, let us see what clause 2 says. The National Bank may make loans and advances under section 1 against the security. Now we are saying कि NABARD पैसा तो दे देगा, NABARD will be giving out the loans, but what are the securities that NABARD can take? ठीक है ना? Securities that NABARD can take is very important. Stocks, funds, securities other than the immovable property in which trustee is authorized to invest trust money by way. अब वो कह रहा है कि immovable property जिसमें trustee is authorized to invest trust money, इसके अलावा वो हर चीज की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर एज ए सिक्योरिटी ले सकता है, ठीक? Promissory notes supported by documents to the title to goods, such documents having been transferred, assigned or pledged in borrowing institution as a security of loan. अब वो कह रहा है कि promissory note which is backed by a title to goods, मतलब promissory note जो होता है promise to pay लिखा होता है ना उसमें, उसके साथ एक टाइटल टू गुड्स मतलब कोई जमीन के कागजात या उस गुड्स का कोई कागज साथ में लगा होना चाहिए, वो promissory note आप दे सकते हो, ठीक है? Another thing is provided that an NABARD may, whenever it considers it necessary so to do, except in lieu of the actual assignment of any such security in favor of national bank, a declaration in writing from the borrowing institution. अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी देने को नहीं है तो what borrower can do is it can declare in writing, एक राइटिंग में डिक्लेयर कर सकता है, stating that it holds such documents of title of goods as may be set out in the declaration, ठीक? और कुछ भी वो एज अ डिक्लेरेशन दे सकता है इफ नाबार्ड आस्क्स, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास सिक्योरिटी देने को नहीं है तो आप रिटर्न में डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, ठीक है ना? अब देखिए, अब वो कह रहा है कि नेशनल बैंक नाबार्ड में इन इट्स डिस्क्रिप्शन ग्रांट अ लोन और एडवांस टू एनी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और अ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक if the loan or advance is fully guaranteed for repayment of principal and interest by the central government, ठीक है ना? अब वो कह रहा है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को भी लोन दे सकता है, ठीक? To any state cooperative bank which is a scheduled bank if the loan or advance is secured either by bill of exchange. important thing यहाँ पे ये है कि स्टेट कोऑपरेटिव या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को तभी लोन देगा if the loan is fully guaranteed for the payment of principal and interest by the government, ठीक है? गवर्नमेंट कह रहा है कि जो पेमेंट रीपेमेंट होगा दैट विल बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना? बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोरोवर को बैक कर रही है कि नो नो दैट पर्सन विल रिपे द मनी, ठीक है ना? अब वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कब लोन देगा? इफ द लोन और एडवांस इज सिक्योर्ड ईदर बाय बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड बाय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड असाइंड इन फेवर ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना? कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कब लोन दिया जाएगा? जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट कोई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बना के देगा एंड दैट विल बी असाइंड इन द फेवर ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तभी इसको आप स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन देंगे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? बहुत ही बारीक है ये, एग्जाम्स में आप पूछा जा सकता है, ठीक है ना? इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. नाउ अनदर थिंग, नॉट इट इज सेइंग कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में जो कुछ का है वी शुड नॉट पे अटेंशन ऑन दैट फॉर दिस पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन.
The NABARD may also make loans and advances repayable on demand or an expiry of fixed period not exceeding 18 months against promissory notes of a state cooperative or regional bank or an institution approved by subsection 1. कह रहा है कि it is also the case that state cooperative को इन दोनों चीजों के बिना भी लोन दिया जा सकता है, ठीक है ना, बट द ओनली कंडीशन इज नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है हर एग्जाम्स में, एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग पिंक में मार्क कर लेते हैं. ठीक. अब यहाँ कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट बोरोइंग इंस्टीट्यूशन फर्निशेज अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग सेटिंग आउट अ पर्पस फॉर विच इट हैज बीन मेड. ठीक है. द बोरोइंग इंस्टीट्यूशन जो भी बोरो कर रहा है, whosoever इज द बोरोवर, इट हैज टू गिव इन राइटिंग कि क्यों लिया जा रहा है, सेटिंग आउट द पर्पस कि क्यों आप ले रहे हो, उसको आप राइटिंग में देना पड़ेगा. जनरली इट इज सीन दैट इट इज गिवन ऑन द एफिडेविट, बिकॉज एफिडेविट में थोड़ा लीगल बैकिंग आ जाती है, तो ये ठीक है. ठीक. तो आज के लिए इतनी रखते हैं वीडियो, 10 मिनट की वीडियो काफी लंबी हो गई है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.